Students, Bismillahirrahmanirrahim. Last topic that we discussed was about reflection of light and whether reflection of light and the laws of reflection is obeyed by spherical surfaces. And this is we tried to prove, and we proved that spherical surfaces also obey the laws of reflection and the phenomena of reflection, and proved it like this. Now, and we also discussed about the mirror formula. And what was the mirror formula? It was simply a relationship between the distance of the object from the mirror, the distance of the image from the mirror, and the focal length. So 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q was known as the mirror formula, and plus and minus p was positive for real, p was negative for imaginary, for virtual. Q was positive image, distance of the image from the mirror. Q was positive for real and negative for virtual. Now the topic for today is a very interesting topic, and this talks about refraction of light. Refraction of light is a phenomena which is a property of light. It obeys, it is an attribute, ये उसकी खसूसियत है रोशनी की कि वो इसको इस phenomena के ऊपर अमल करती है. Now what is refraction? Earlier we talked about reflection. Reflection, what was reflection? In reflection, a ray of light when incident upon another medium is reflected back into the same medium. This process, this phenomena was known as, or is known as, reflection of light. In refraction, the major difference is that the ray of light going in one medium enters the second medium. Reflection में वो दूसरे medium में enter नहीं होती थी, और वहीं से ही दूसरे medium की सतह से दूसरे वसीले की सतह से rebound होती थी. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बॉल फेंकूँ तो इस दीवार को टकरा के इधर वापस आ जाता है, तो जिधर से गया था उसी मीडियम में वापस आ गया. इसको कहते थे हम रिफ्लेक्शन, और इसके दो क़वानीन थे. रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना जिसमें अगर बॉल डाला जाए तो वो दीवार के थ्रू बाहर निकल जाए. सो इन रिफ्रैक्शन a ray of light passes through the medium. And what is refraction? Now we will read the definition of it. The process of bending of light as it passes from one medium to another. यानी रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके स्पेलिंग में भी ख्याल रखना, गलती मत करना. रिफ्लेक्शन में REFLECTION, इसमें रिफ्लेक्शन है, और रिफ्रैक्शन में REFRAC, यहाँ पर है FLEC, वो रिफ्रैक्शन है. एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, सिंपली याद रखो, बेंडिंग ऑफ लाइट. एक वसीले से जब रोशनी की शुआ दूसरे वसीले में दाखिल होती है तो अपना रास्ता भटक लेती है. इस रास्ते को चेंज करने का नाम रिफ्रैक्शन है. और इस फिनोमेना की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन के लिए नाउ वी टेक ग्लास स्लैब. एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्लास की स्लैब लेते हैं. एक शीशे की बनी हुई स्लैब होता है, जिस तरीके से ये है, इस तरह की ये लकड़ी का बना हुआ है, वो शीशे की बनी होती है, उसे ग्लास स्लैब कहते हैं. ओके, वी टेक अ ग्लास स्लैब. ए रे ऑफ लाइट हवा में चल रही है, एयर के मीडियम में है. रे ऑफ लाइट फ्रॉम द एयर AO इज इंसिडेंट एट द पॉइंट O on the surface of the glass slab, on the boundary of the glass slab. यानी ये हवा और शीशे की बाउंड्री के ऊपर वो यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई, वकूफ़ पज़ीर हुई. और बजाय इसके कि सीधा जाने के, ऐसे ये इसका रास्ता था, ऐसे जाना चाहिए था उसको, इसके बजाय वो ऐसे हो गई. ये जो बेंडिंग है, एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट. सो AO इज द इंसिडेंट रे, O is the point of incidence. From here enters the second medium, which is glass, and it changes its direction and goes as O dash. O dash के रास्ते पे चल पड़ती है. ये जो एंगल I है, this is the angle of incidence which is formed by the incident ray AO and the normal at the point of incidence. So एंगल I क्या है? AON, जो एंगल बन रहा है AON. The angle between the incident ray
and the normal at the point of incidence is known as in angle of incidence. Angle of refraction ये है, वो कौन सा एंगल है? नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, ये रिफ्रैक्टेड रे है. O and O dash is the refracted ray. This is refracted ray. O and O dash is refracted ray. So angle of refraction कौन सा हुआ? Between ये R जो बनाया, between the normal and the refracted ray. The angle which is formed between the refracted ray and the normal at the point of incidence is known as the angle of refraction. And then again at point of incidence OA जो कि दूसरी सतह है ग्लास स्लैब की, वहाँ से ये हवा में वापस चली जाती है. दिस इज अगेन एयर, ये अब दोबारा एयर में आ जाती है. ये एयर का मीडियम है, ये ग्लास का मीडियम है, ये फिर से पहले भी एयर का मीडियम है. सो इट कम्स आउट एंड द रे O dash B, द रे O dash B इज नोन एज इमर्जेंट रे, यानी जो कि खारिज हुई है, जो उसमें से निकली है शीशे में से. दिस इज इमर्जेंट रे. सो इंसिडेंट रे AO, O and O dash refracted ray, and O dash and B emergent ray. Angle of incidence I and angle of incidence R. This angle of refraction है वो. Okay. Now when a ray of light passes from a lighter medium, हल्के मीडियम में से लतीफ़ वसीले में से निकल के एक कसीफ वसीले में आती है, डेंसर मीडियम है. जो डेंसर मीडियम है उसको कसीफ कहते हैं. So when a ray of light from a lighter medium enters into denser medium, then और रेयर मीडियम, इसको रेयर भी कहते हैं, फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. ये इसका रास्ता था, वो ऐसे हो गई, तो ये नॉर्मल के नज़दीक आ गई. सो दिस इज इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. और अगर वो ग्लास से एयर में जाती है तो उसका रास्ता बजाय ऐसे जाने के वो ऐसे हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नाउ वी कम टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. There are two laws of refraction. One, the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Please remember this thing. ये पहले laws of reflection जो थे उनकी तरह का ये है. उसमें हमने क्या पढ़ा था? We read about the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence lie in the same plane. यहाँ पे refraction में है the incident ray, the refracted ray and the normal. Reflection के बजाय refracted ray कहेंगे. And the normal at the point of incidence lie in the same plane. ये इसका पहला कानून है. This is the first law of refraction. Second, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is always equal to a constant. क्या है? Sin I over sin R is equal to N is equal to a constant. ये constant N है. इस constant N को हम refractive index कहते हैं. So what is the second law? The ratio of the sine of angle of incidence. Ratio कहते हैं इसको, ये जो लकीर नीचे लगाई, the ratio of the angle of sine of incidence to the sine of angle of refraction bears a constant ratio. और इसको n को constant ratio को हम क्या कहते हैं? refractive index. ये आपको शो करता है कि refractive index क्या है of the second medium with respect to first medium. यानी दूसरे मीडियम का refractive index बनता है sin I और sin R is equal to n, और n किसका refractive index है? इसका. और refractive index का मतलब क्या है? ये बताता है कि कितनी ही सलाहियत किसी मीडियम में है कि वो रोशनी को बेंड कर सके. कितना बेंड करती है? थोड़ा करता है या ज़्यादा करता है? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का मिलता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. नाउ इस रेशो को साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन इन एग्जाम्स कम. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? Snell's law is simply the ratio of sin I over sin R is equal to n. इस चीज़ को हम कहते हैं Snell's law. Okay. Now speed of light in a medium जो है वो कितनी होती है? मसलन रोशनी की शुआ जा रही है हवा में, उसके बाद दाखिल होती है वो दूसरे मीडियम में, शीशे में या तेल में या पानी में,
तो उसकी रफ्तार कितनी है, क्या कोई रफ्तार पे असर पड़ता है। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली जो है होती ही उस वक़्त है जबकि उसके अंदर उसकी रफ्तार रोशनी की जो है वो उसमें कमी बेशी आ जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। रिमेंबर दिस थिंग, रिफ्रैक्शन सिर्फ उस वक्त होती है, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन कब होता है, जब रोशनी की रफ्तार दोनों मीडियम में मुख्तलिफ हो जाए। इस फिनोमेना जो है ना, ये रिफ्रैक्शन होती ही इस चीज़ की वजह से। अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में इज़ 3 × 10⁸ meters per second and the speed of light in water is 2.3 × 10⁸ meters per second and in glass is 2 × 10⁸ meters per second, then the refractive index is the ratio of the speed of light in air to the speed of light in a different medium. So what is a refractive index? इसको एक फार्मूला sin I और sin R के ज़रिए निकाला था। दूसरा फार्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हमेशा हवा में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको पहले लिखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ये जो है ना n = c/v। c हमेशा हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे इसके लिए ओवर v, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = c/v। इसके ज़रिए से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का निकाल सकते हैं। नाउ आई गो ओवर अगेन, द लास्ट टॉपिक वाज अबाउट रिफ्लेक्शन, दिस टॉपिक इज अबाउट रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ये वो प्रोसेस है जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। एंड डेफिनेशन क्या है इसकी? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और इसके लिए ग्लास स्लैब लेंगे, रोशनी की शुआ उस पर यहाँ टकराती है, यहाँ से आगे चलती है, उसका रास्ता ट्रेस करेंगे और ये साइन आई और साइन आई निकालेंगे। यू नो व्हाट इज नाउ लॉज ऑफ व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। नंबर 2, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction bears a constant ratio n, और इसको कहते हैं refractive index of the second medium with respect to first medium। और यही फॉर्मूला sin I over sin R is equal to n को हम कहते हैं Snell's law। Okay, now ये एक तरीका है, this is one way of finding out the refractive index of a certain medium। Another is that you find the speed of light। ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना क्यों होता है? रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑलवेज अकर व्हेन द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन द टू डिफरेंट मीडिया। जब ये रोशनी की शुआ जो है इसकी जो रफ्तार बदल जाती है मुख्तलिफ मीडियम में, तो उसके मुताबिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट्स इन डिफरेंट मीडिया। इसकी हवा में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8 meters per second है, पानी में 2.3 × 10⁸ meters per second है, और ग्लास में 2 × 10⁸ meters per second है। एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इस चीज़ को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फॉर्मूले की शक्ल मैथमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, n = c/v। So please go over this point in this topic, make notes of it, make headings, draw diagrams, try to understand the complete topic, and if you have difficulty, please feel free to talk to me, to call me, even on WhatsApp number. The second one is the WhatsApp number, the first is the ordinary number. Call me or send me a message. I'll be glad to answer your queries if any. Thank you very much.